हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बूट कैंप। इस लेक्चर में हम मशीन लर्निंग इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? Machine learning is a branch of computer science which deals with system programming in order to automatically learn and improve with experience. मशीन जो है ये खुद सीखता है और improve करता है with experience. For example, robots are programmed so that they can perform the task based on data they gather from sensors. It automatically learn programs from data. जो data ये gather करता है from sensors, ये उससे सीखता है और experience gain करता है. Mention the difference between data mining and machine learning. Machine learning relates with the study, design and development of the algorithms that give computers the capability to learn without being explicitly programmed. तो मशीन लर्निंग में मशीन को हम एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करते, ये खुद सीखता है और उसके मुताबिक ये डिसीजंस लेता है. Data mining is the process at which the unstructured data tries to extract knowledge or unknown interesting pattern. Data mining basically is an interdisciplinary subfield of computer science and statistics with an overall goal to extract information from a dataset and transform the information into a comprehensible structure for further use. और इसके काफी दोनों में डिफरेंस हैं, लेकिन at heart both be about learning from data and make better decisions. But the way they go about this is different. जैसे data mining is simply looking for patterns that already exist in the data. लेकिन machine learning जो है ये machine learning goes beyond what is happening in the past to predict future outcomes based on the pre-existing data. इसी तरह data mining, the rules or patterns are unknown at the start of the process. लेकिन machine learning में the machine is usually given some rules or variables to understand the data and learn. तो काफी डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन डाटा माइनिंग के लिए भी हम मशीन लर्निंग को यूज करते हैं. What is overfitting in machine learning? In machine learning, when a statistical model describes random error or noise instead of underlying relationship, overfitting occurs. जो सेकंड है हमारे पास वजह बन सकती है वो है when a model is excessively complex. Overfitting is normally observed because of having too many parameters with respect to the number of training data types. The model exhibits poor performance which has been overfit. Why overfitting happens? The possibility of overfitting exists as the criteria used for training the model is not the same as the criteria used to judge the efficacy of a model. तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो जो क्राइटेरिया हमने ट्रेनिंग के लिए रखा होता है वो जब सेम नहीं होता. इन अदर वर्ड्स, जो डाटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं और जो डाटा टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, जब वो डिफरेंट होता है तो हमारे पास हम ओवरफिटिंग ऑब्जर्व करते हैं. हाउ कैन यू अवॉइड ओवरफिटिंग? बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ data, overfitting can be avoided. If you have a small data set and you are forced to come with a model based on that, in such situation you can use a technique known as cross-validation. Cross-validation is a resampling procedure used to evaluate machine learning models on a limited data sample. The procedure has a single parameter called k that refers to the number of groups that a given data sample is to be split into. और इसी वजह से इसको k-fold क्रॉस वैलिडेशन भी हम कहते हैं. The goal of cross validation is to test the model's ability to predict new data that was not used in estimating it, in order to flag problems like overfitting or selection bias and to give an insight on how the model will generalize to an independent data set. तो क्रॉस वैलिडेशन जो ये काफी हमारे पास बेहतरीन एक तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं ओवरफिटिंग ऑब्जर्व करने के लिए, सिलेक्शन बायस को देखने के लिए, और टू गिव एन इनसाइट ऑन हाउ द मॉडल विल जनरलाइज टू एन इंडिपेंडेंट डेटा सेट. What is inductive machine learning? The inductive machine learning involves the procedure of learning by examples where a system from a set of observed instances tries to induce a general rule. तो inductive machine learning जो है involves the process of learning by examples. ये examples से लर्न करने की कोशिश करता है where a system from a set of observed instances tries to induce a general rule. तो ये एक general rule जो है उसको induce करने की कोशिश करता है from examples. What are the
5 popular algorithms of machine learning. सबसे पहला हमारे पास डिसीजन ट्रीज, जो कि हम क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसमें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है. न्यूरल नेटवर्क्स में हिडन लेयर्स वगैरह हम यूज करते हैं, न्यूरॉन्स को यूज करते हैं. प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क्स, इसमें बेजियन नेटवर्क हमारे पास एग्जांपल है. नियरेस्ट नेबर, जो कि जिसमें हमारे पास जो डाटा होता है हम क्लासिफाई करते हैं. हम 2 सेंट्रॉइड्स लेते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो डाटा हमारे पास गिवन है वो कितने करीब है दोनों सेंट्रॉइड्स के, और उसके मुताबिक फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं 2 ग्रुप्स या जितने भी हमने सेंट्रॉइड्स लिए हुए हैं, तो उनके मुताबिक हम स्प्लिटिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं. सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, इसमें हम लाइंस या हाइपरप्लेन यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, और अगर हमने रिग्रेशन करनी है तो उसके लिए सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर यूज होता है. What are the different algorithm techniques used in machine learning? The different type of techniques in machine learning are supervised learning. Supervised learning में हम जो डाटा प्रोवाइड करते हैं उसके साथ हम लेबल या टारगेट कॉलम भी हम साथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे मशीन फिर सीखता है कि क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन जो है फिर वो उसके मुताबिक सीख कर आगे हम टेस्ट करते हैं कि मॉडल किस तरह प्रिडिक्ट कर रहा है. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास हम जो लेबल है या टारगेट कॉलम है हम वो प्रोवाइड नहीं करते मॉडल को, और मशीन जो है वो खुद सीखता है और उसके मुताबिक ये फिर डिसीजन लेता है. सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम सुपरवाइज्ड या फिर लेबल डाटा और अनलेबल्ड डाटा दोनों प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो लेबल डाटा है वो हम कम प्रोवाइड करते हैं, जो ज्यादा डाटा है वो अनलेबल्ड होता है. रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ये enable हम करते हैं an agent to learn in an interactive environment by trial and error using feedback from its own action and experience. तो हमारा मेन गोल जो इसमें reinforcement learning में होता है to maximize the total reward. तो बेसिकली ये हम रोबोट वाली साइड पे reinforcement learning को यूज करते हैं. What are the 3 stages to build the hypothesis or model in machine learning? मॉडल ट्रेनिंग, हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, हम डाटा प्रोवाइड करते हैं और उससे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं. देन मॉडल टेस्टिंग, हम जब मॉडल ट्रेन हो जाता है उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, उसकी एफिशिएंसी देखते हैं, एफिकासी देखते हैं कि उसने जो इंटेंडेड रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं क्या वो दे रहा है या नहीं, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, वो उसकी प्रिसीजन वगैरह कैसी है. अप्लाइंग द मॉडल, तो जब हम दोनों ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग जब कर लेते हैं तो हम मॉडल को फिर आगे अप्लाई करते हैं. What is the standard approach to supervised learning? The standard approach to supervised learning is to split the set of example into the training set and the test set. तो स्टैंडर्ड अप्रोच जो है सुपरवाइज लर्निंग की, हमारे पास जो डाटा होता है उसमें हम जो डाटा को ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में स्प्लिट कर देते हैं. जो ट्रेनिंग सेट होता है उससे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, मॉडल सीखे ट्रेनिंग सेट से, और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि मॉडल ने जो सीखा है उसके मुताबिक वो रिजल्ट हमें कैसे वो प्रेडिक्ट करके दे रहा है, और उसको फिर हम कंपेयर करते हैं जो प्रेडिक्शन है को जो टेस्ट सेट है उसके साथ. What is training set and test set? Training set is an example given to the learner. Test set is used to test the accuracy of the hypothesis generated by the learner. जो ट्रेनिंग सेट है ये एग्जाम्पल्स हैं या पास्ट हमारे पास डाटा होता है, वो हम प्रोवाइड करते हैं मॉडल को ताकि वो उससे सीख सके, और टेस्ट सेट हम यूज करते हैं. टेस्ट सेट में फिर हम चेक करते हैं कि एक्यूरेसी हमारे पास क्या आ रही है जनरेटेड बाय द लर्नर. जो प्रेडिक्शंस हमें टेस्ट सेट के जो कॉलम्स होते हैं या फीचर्स होते हैं जब हम प्रोवाइड करते हैं, उस पर जो प्रेडिक्शंस हमें मिलती हैं उसको हम जो हमारे पास टारगेट कॉलम होता है उसके साथ टेस्ट टारगेट कॉलम के साथ हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास एक्यूरेसी क्या आ रही है. लिस्ट डाउन वेरियस अप्रोचेस फॉर मशीन लर्निंग. द डिफरेंट अप्रोचेस इन मशीन लर्निंग आर concept versus classification learning, symbolic versus statistical learning, inductive versus analytical learning. Explain what is the function of unsupervised learning. तो unsupervised हम learning use करते हैं to find clusters of the data, to find low dimensional representations of the data,
to find interesting directions in data, interesting coordinates and correlations, and to find novel observations and dataset cleaning. Explain what is the function of supervised learning. Supervised learning हम यूज करते हैं for classifications, for speech recognition, for regression, to predict time series, to annotate strings. That's all. Thank you, and we'll meet in next lecture.